Thank you for joining everyone. As you all know, this is my aggressive portfolio that I'm building to 1 crore rupees. I have companies who are from different sectors and working in completely different fields. Some are in rice business, some are in aluminium production, some make cookers and some are in finance or making homes and all. The idea is to consistently keep on putting money into companies that you understand and keep riding the volatile ride. When your share will go down, you will doubt yourself, people will doubt you, and everything seems bad. But when things go green, everything and everyone is happy. If you see my portfolio right now, it is at 25,47,010 rupees and is up 38.93% overall. So I have achieved already the quarter of my goal of reaching 1 crore rupees. From last portfolio update, it is up 56,674 rupees, that is 2.27%. So we are doing good, and it's very funny that here and there one of my stocks fall down and I buy the dips to bring my average down. After a while it goes up and makes me paper profit. Then the same happens with other company and the whole cycle continues. So I'm getting good opportunities, small ones but good enough to keep deploying my extra cash slow and steady. Exactly like how just right now you have good opportunity to help our small channel by smashing the like button. It is totally free for you and it doesn't take you more than a second. लेकिन इस वीडियो को बनाने में मुझे कई दिन लग जाते हैं और ये मेरे लिए बहुत हेल्प होती है अगर आप सब लोग लाइक बटन को प्रेस करते हो तो. Okay, moving on. Now I get a lot of questions from you guys about why am I investing in Edelweiss company. And most of these questions starts coming in when the price of the stock falls down. And Edelweiss is facing the same thing, the price has started to go down and it's nothing new. Similar thing happened in the case of Butterfly Gandhimati, Rain Industries, LT Foods and etc etc. It's very common to feel skeptic when the stock falls and you start doubting the whole reason why you bought it in the first place. अगर आप देखेंगे तो मेरे इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मेरे पास 5,907 शेयर्स हैं एडलवाइस के, जिनका एवरेज बाइंग प्राइस है 73 रुपीज़. इस कंपनी ने मुझे इस साल 5,121 रुपीज़ डिविडेंड दिया है और मेरा इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 5 to 7 years के लिए है, if not forever. Until unless of course something happens, something changes in the company. So you guys know that I'm quite serious about this investment and this is not some short-term buy for a couple of years. I treat myself as the owner of the company and not just a participant for short period. तो इसलिए आज हम बात करेंगे एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि मेरी सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग है, और उन रीजंस के बारे में कि क्यों लास्ट कुछ महीनों में मैंने इसमें 2 से 3 लाख रुपए लगाए हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के स्टार्टिंग पॉइंट से, ताकि हम समझ सके कि कंपनी कैसे बनी और इसकी ग्रोथ कहां से और कैसे हुई है. Knowing the backstory of the company helps you in understanding the management mindset quality and the future prospect of the company. तो एडलवाइस कंपनी स्टार्ट हुई है 1995 में और इसके फाउंडर्स हैं राजेश शाह एंड वेंकट रामास्वामी. और राजेश शाह इस टाइम पे चेयरमैन और सीईओ हैं कंपनी के बहुत टाइम से, तो हम इनकी स्टोरी को फॉलो करेंगे. तो राजेश शाह ने स्टार्ट की अपनी जर्नी फाइनेंशियल सेक्टर में ICICI के लिए काम करके. In this time, he was fortunate enough to meet and talk with Indian greats like Infosys owner Narayan Murthy, Mahindra & Mahindra owner Anand Mahindra, Adi Godrej of Godrej Companies, and Rakesh Jhunjhunwala, as we all know, the big bull of India. They all somewhere inspired him to be an entrepreneur in that time of new growing India. Remember, at that time, India had just opened itself financially to the other countries, and it was really a time when India was changing and developing on rapid speed. So he, along with his friend Venkat Ramaswamy, collected 1 crore rupees to start the new business. The money came from savings, borrowing from friends and family, and also by taking loan against Rajesh Shah's home at Mahalakshmi in Mumbai. अब 1 करोड़ रुपए उस टाइम के लिए भी काफ़ी छोटा अमाउंट था, और अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में काम करना हो तो 1 करोड़ में आप ब्रोकर नहीं बन सकते थे उस टाइम पे, और ना ही आप काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे. So they decided to start with small investment banking works for some old clients of Rajesh Shah from ICICI. This is 1996 now. They have 1 employee except the founders and the capital of just 1 crore rupees only. Now by 1999, they have made 1 crore of just profit in 1 year. In 2000, the profit increased to 10 crore that year. In 2002, they bought broking company named Roshniel Securities and renamed it later as Edelweiss Securities to start their own brokerage company. They bought the company for 8 crore rupees in 2002, and in 2021 it is almost 5,000 crores. Amazing scaling, isn't it? Let's quickly go through the other big milestones and new steps they have achieved and taken till now. 2005,
reached net worth of 200 crores. 2007, Edelweiss commenced asset management business with the launch of real estate funds and also started global wealth management. 2010, acquired Anagram Capital for 164 crore rupees. 2011, Edelweiss Tokyo Life Insurance was established as a joint venture between Edelweiss and Japanese insurer Tokyo Marine. Edelweiss held a 74% stake in the JV. In 2014, Edelweiss Financial Services acquired Mumbai-based asset management company Forefront Capital Management. In 2016, Edelweiss Asset Management Company completed the acquisition of fund schemes of JP Morgan Asset Management India. Also in 2016, Edelweiss Financial Services Limited also agreed to acquire Ambit Investment Advisors long-short hedge fund Ambit Alpha Fund. In 2016, a pension fund manager in North America acquired 20% equity stake in Edelweiss Asset Reconstruction Company with a view to invest annually in stressed assets and the specialized corporate credit segment over a 4-year period. Last year in 2020, PAG bought 51% of Edelweiss Wealth Management for Rs 2,200 crores. Remember, this company they started in 2007 only, and in just 13 years built it up to India's second biggest wealth management company and became worth of approx 4,400 crore rupees. Just this business. Just in 13 years, 4,400 crores business they built up. इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कंपनी की बैक स्टोरी जानना ताकि हम रियलिटी में देख सकें कि उन्होंने कैसे काम किया है अभी तक, ना कि उसके शेयर प्राइस को देखते रहें और उसके अकॉर्डिंग बताएं कि कैसी कंपनी है. Edelweiss got started in 1995 with a capital of just 1 crore rupees, and now in 2021 they are worth around 8,500 crore rupees. So you can see how they have built the wealth systematically over the years. And now if you see in 2021, Edelweiss is a giant organization with 10 businesses in it. The main 4 verticals are credit, wealth and asset management, asset reconstruction and insurance. Now don't think of Edelweiss as any other finance company with just some different verticals under it. This company strives for excellence, balancing both growth and risk management, and that is very important if you have any sort of lending business. तो अगर आप लोग जाके बाकी लेंडिंग कंपनीज को चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि उनकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है ज़्यादा रिस्क लेना, बिकॉज ज़्यादा रिस्क लेके आपको बड़ा इंटरेस्ट मिलता है और इसी के चलते सारी लेंडिंग बिजनेस ने अपने बिजनेस खोए हैं. तो एडलवाइस रिस्क को ध्यान में रख के ग्रोथ के बारे में सोचती है. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना कैपिटल सिक्योर रखना है, अदरवाइज कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैंकरप्ट होने में. तो चलो पहले देखते हैं कि क्या एडलवाइस कंपनी कॉम्पिटिटिव है मार्केट में या सिर्फ सर्वाइव करती है समहाउ. बिकॉज अगर कोई कंपनी सिर्फ सर्वाइव करती है तो उसमें पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पैसे उसमें ग्रो नहीं होंगे. तो हमें चाहिए कोई कंपनी जो कि अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हो लगातार और टाइम के साथ अपनी मार्केट पोजीशन भी बढ़ाती जा रही हो. बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट गेट इनटू शेयर प्राइस राइट नाउ. थोड़ी देर के लिए शेयर प्राइस को अलग रख के देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में कैसा कर रही है, और ये हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इनकी मार्केट पोजीशन कैसे इंप्रूव हुई है उससे. The wealth and asset management business that Edelweiss started in 2007 is worth 11.6 billion rupees right now. It has 28% share in net revenue of the whole company. I love this business as India is just starting to get into these advisory services, and most of India's wealth, I think over 95% of the wealth, is still not taking advantage of these services. So with coming times, we will be seeing exponential growth in this side of the business. And the best part of this business is that you get fees and commission from it, which provides the whole company a somewhat steady growth in this vertical. So Edelweiss is the biggest player in alternative asset segment in India and second largest non-bank wealth management company. They have international partners who are specialists of these businesses and provide Edelweiss the global knowledge of how to scale and beat other players in the game. These big partners are Cora Management, Sanaka Capital, आर्थर गैलागर कंपनी, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, अभी पीएजी कंपनी ने भी इसमें 51% शेयर खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास काफ़ी कैश है एक्सपैंड करने के लिए. इस बिजनेस का ग्रॉस रेवेन्यू है 15.07 बिलियन रुपीज़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1.85 बिलियन रुपीज़ और रिटर्न ऑन इक्विटी है 23%. पिछले 5 साल में कस्टमर एसेट्स 8 टाइम्स बढ़े हैं, 6 टाइम्स ग्रोथ हुई है एसेट्स अंडर एडवाइस की और 19 टाइम्स ग्रोथ हुई है एसेट अंडर मैनेजमेंट बिजनेस की. एंड आई टेल यू, दिस पार्टी इज नोवेयर इवन इन द मिडल.
India's household wealth was around $12.6 trillion in 2019. Now it must be somewhere 16 to 17 trillion dollars, out of which hardly 1 to 3% get invested in equities. अभी ये नंबर बढ़ने लगे हैं, बट अभी भी हम बस स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। आप इमेजिन करिए क्या होगा अगर सिर्फ 20% पैसा मार्केट में आ जाए। इमीडिएटली 6 to 8 टाइम्स मार्केट बढ़ जाएगा और इसका काफ़ी बड़ा शेयर एडलवाइस के पास आएगा, क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं और इनको हमेशा मार्केट का काफ़ी साइजेबल हिस्सा मिलता आया है। सेकेंड बिजनेस वर्टिकल इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और किसी भी रीज़न की वजह से उसे पे करने में फेल होती है, तो ये कंपनीज जाती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करके इनके लोन्स को बैंक को वापस करती है और बीच में फीस और कमीशन लेती है। ये सेक्टर अभी भी इंडिया में काफ़ी नया है और एडलवाइस इसमें नंबर 1 रैंक पे है। एंड इट्स क्वाइट अ स्टडी बिजनेस एज लॉन्ग एज यू आर स्मार्ट इनफ टू चूज क्वालिटी बिजनेसेस टू डील विद। ये बिजनेस एडलवाइस के टोटल रेवेन्यू का 10% हिस्सा है और CDPQ की इसमें भी पार्टनरशिप है। तो एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस की नेटवर्थ है 20.35 बिलियन रुपीज, नेट रेवेन्यू है 4.33 बिलियन रुपीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.06 बिलियन रुपीज एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट 431.88 बिलियन रुपीज। इनकी रिकवरी 60% बढ़ी है लास्ट ईयर में और ये लगातार बढ़ती जा रही है विद एवरी पासिंग ईयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बिजनेस अभी भी काफ़ी नया है इंडिया में और इसमें स्कोप काफ़ी अच्छा है गुड रेवेन्यू जनरेट करने का फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स टू कम। Third sector is insurance, which is one of the newest business in this company. It provides 30% of the share in net revenue of overall company. इसमें इन्होंने पार्टनरशिप की है टोक्यो मरीन होल्डिंग्स के साथ, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी नॉलेजेबल कंपनी है एंड एडलवाइस रियली गेट्स अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देम टू स्केल अप बिजनेस एंड फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. It's digitally driven new age model and continue to be the fastest growing in the whole industry. Because of this, during the lockdown when all the other insurance companies have seen the degrowth, Edelweiss has outperformed everybody else. The individual analyzed premium has increased 24% CAGR. The last business in pipeline is credit business. You know, home loan, car loan and all those things, and also the corporate loans as well. This provides Edelweiss with 32% of overall net revenue. They have partnered with CDPQ in this one too. In recent times, they have decreased their wholesale book to decrease the risk factor a little bit. We have seen this happening with other lenders too in last couple of years. इस बिजनेस में मेन चीज़ है कि आपको अपना रिस्क एक्सपोजर कम रखना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज ट्राई करती हैं कि ज़्यादा लोन दें ताकि उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और इसमें आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए एडलवाइस ने बैंक्स के साथ काम करना शुरू किया है, जिसमें बैंक्स हेल्प करता है पैसा लेंड करने में और एडलवाइस का रिस्क एक्सपोजर भी काफ़ी कम हो जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक co-producing a movie. If you are making a movie of 100 crore, then all the risk is on you. But if you take 3 equal partners, then everybody is taking only 25 crore risk, right? तो अगर कभी मार्केट में 2018 जैसा IFS वाला सीन होता है तो एडलवाइस को कभी ज़्यादा रिस्क नहीं होगा कैपिटल खोने का। सो नाउ यू कैन सी हाउ दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स फ्रॉम 1 करोड़ कैपिटल टू 8,000 crore कंपनी विद 10 businesses inside it. Well, the market cap keeps on changing according to the share of the company. In each business, they have partnered one of the best institutions from that specific field, so it gives them a lot of knowledge and lot of cash power. Their book value has gone from 0.1 rupees to 68.9 rupees in 2020 after pandemic. In 2021, it is around 81 rupees. And if we see other finance companies, they may not be having the same business structure like Edelweiss, but you can see they have been priced higher than their book value. Yes, of course, this is not apple to apple examples as Edelweiss has multiple businesses inside it. But as you can see how fast they all are growing. And according to me, when they're gonna enlist these businesses separately in the market, it will be a game changer for all the shareholders. Let's now see the prices of other competitors just based on book price to get more insight of pricing. So Edelweiss is valued at 0.8 of book value. Piramal Industries is priced at 1.28 book value. ICICI Securities, which is a direct competitor to Edelweiss's brokerage and wealth management business, is priced at 13.34 of the book value. Then IIFL Wealth Management is priced at 3.62 of the book value. Generally, you will find that these asset management, wealth management and broking kind of businesses are valued at over 3 times the book value. And if it's some big name like ICCI, then as you can see, it can go up to 12 to 15 times the book value.
The problem right now is that Edelweiss has all these lucrative businesses within the whole organization right now, which they will be separately listing in the market in coming years. For wealth and asset management, they have said within 2 years I think, and others will soon follow the lead. और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये मैनेजमेंट वाले बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हैं और इंडिया इनमें जस्ट स्टार्टिंग लाइन पे है और पूरी मैराथन अभी बाकी है. Yes, they have posted negative return recently, but so does most of the companies, all thanks to pandemic. The time to buy a company is not when everybody is buying into it, but when it is still little less discovered by the market. And currently at 62 rupees at the market cap of less than $1 billion mark, I am pretty excited to be a shareholder of this company. पिछले 3-4 सालों में हमें काफ़ी डिफिकल्टी से गुजरना पड़ा है. कभी ILFS का फ्रॉड, कभी लिक्विडिटी क्रंच, कभी NBFC स्केयर, तो कभी पैंडेमिक. 2017 के बाद से इन फाइनेंस कंपनीज को संभलने का मौका ही नहीं मिला है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई एडलवाइस प्राइस इज सो लो टुडे. बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बिना बड़ी कैपिटल के इन्होंने इतने सारे बिजनेस डेवलप किए हैं और आने वाले टाइम में विद द हेल्प ऑफ देयर पार्टनर्स आई एम प्रीटी श्योर ये अपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन मेंटेन करेंगे. तो देखते हैं और कौन से बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में और किस प्राइस में इन्होंने शेयर को खरीदा है. तो राकेश झुंझुनवाला ने ये शेयर फर्स्ट टाइम खरीदा था 2014 में एट द प्राइस ऑफ 55 रुपीज़. तो 7 साल पहले झुंझुनवाला को 55 प्राइस रुपीज़ सही लगा था इस कंपनी के लिए और इन्होंने 1% शेयर खरीद लिया था कंपनी के. आज झुंझुनवाला 1.2% के शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में. मोहनीश पबरई ने पहली बार ये शेयर खरीदा था 2019 में 180 रुपीज़ पे. उस टाइम इन्होंने 194 करोड़ रुपीस लगाए थे इस कंपनी में और आगे जाके इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग हर साल बढ़ाई है जो कि अब है करीब 6% के पास. और मेरा एवरेज बाइंग प्राइस इस टाइम है 72.75 रुपीज़ पे और मेरे पास हैं 5,907 शेयर्स इस कंपनी के. मैं अभी भी बाय कर रहा हूँ जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है. इस साल मुझे 5,121 रुपीज़ मिले हैं एज डिविडेंड फ्रॉम एडलवाइस. तो देखते हैं मैंने और क्या खरीदा है लास्ट अपडेट के बाद से. So of course I bought more of Edelweiss shares. I put in 10,000 rupees more at 61.38 rupees. The other company that I bought was Thnk Reality that I've been telling you guys from past many months. First I bought 10,000 rupees worth of shares at 259 rupees and then 30,000 rupees worth of shares at 265 rupees. So total buying has been of around 50,000 rupees from last portfolio update. I'm still buying and I will keep on buying whenever these shares will fall in the future. So my business is still the same. Less revenue, more tears. I'm still paying my staff with the small revenue that we are able to generate in this lockdown. But things are going to be same for some time now and we all kind of know that. In these times, I have really gotten a lot of help from my habit of keeping track on expenses and cash flow. I'm saving as much money as possible and have almost cut down on almost all expenses. Cash in hand, 4% of total net worth. तो कैश लो है बट लाइक्स ऊपर हो सकते हैं अगर आप सभी अभी स्मैश करते हो लाइक बटन को. तो ओके, सो रिसेंटली वी हैव सीन अ लिटिल ड्रामा हैपनिंग विद द होल बिटकॉइन कम्युनिटी व्हेन टेस्ला स्टॉप्ड टेकिंग बिटकॉइन एज करेंसी टू बाय टेस्ला कार. This happened due to high energy consumption of Bitcoin and this news has made Bitcoin plunge. It is at somewhere 40 lakhs right now. What I think about it? Well, I don't think it will matter much in the long run. Bitcoin has gone ahead in the game and Elon Musk and Tesla can bring it only so much down. As you can see, my Bitcoin is at 9.33 lakh rupees right now. On the opposite hand, Ethereum has maintained its price somewhat after crazy ups and downs it has seen in recent times. It is at 3 lakhs 20,000 right now. My stash of 4 Ethereum is at 12.67 lakhs. Ripple has also gone down a little and mine are valued at 2.66 lakhs. Now let's come to new crypto that I bought. तो जैसा कि मैं कुछ लास्ट अपडेट से बोल रहा हूँ कि मैं क्रिप्टोज में और इन्वेस्ट करने वाला हूँ और इन लास्ट कुछ वीक्स में मैंने फाइनली कुछ और क्रिप्टोज खरीदे हैं. तो ये था मेरा पोर्टफोलियो पहले, वेरी बेसिक एंड सिंपल. और इसके बाद से मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन से और कॉइन्स हो सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो अपने नीश में मोस्ट सक्सेसफुल होने में. तो फर्स्ट क्रिप्टो जो मैंने खरीदा है वो है पॉलीगॉन, जिसका पहले नाम था मैटिक नेटवर्क. मैंने 1000 कॉइन्स खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 40 रुपीज़. सो टोटल 40,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ बाइंग. पॉलीगॉन बेसिकली इथेरियम ब्लॉकचेन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, जैसे कि उसकी नेटवर्क स्केलेबिलिटी को बढ़ाना और उसके ओवरऑल ट्रांजैक्शन स्पीड को इम्प्रूव करना. ये बेसिकली डेवलपर्स की हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग देम टूल्स टू क्रिएट स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन commonly known as dApps that prioritize performance, user experience and security. What happened? Got confused?
ओके, तो सिंपल एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखना कि मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत नॉलेज है इस एरिया के बारे में, और ये बहुत ही छोटा सा और वेग सा एग्जांपल है, बट ईजी है तो शायद तुम लोग समझ सकोगे इसे। बेसिकली टेक इथेरियम एज गोल्ड, और गोल्ड का फंक्शन था कि आप उसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, राइट। बट गोल्ड को कैरी करना लंबी जर्नी के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि गोल्ड हैवी है और फिर आपको गोल्ड को चेक करना भी आना चाहिए कि गोल्ड असली है या नकली। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पेपर नोट्स आ गए, जो कि बहुत इजी और लाइट है कैरी करने के लिए, और इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना भी काफ़ी इजी है। और ये पेपर मनी है पॉलीगॉन। वेल, दिस एग्जाम्पल इज एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रू, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग L2 स्केलिंग सॉल्यूशन टू इथेरियम। तो इसका मेनली ये मतलब है कि इथेरियम में जो प्रॉब्लम्स डेवलपर्स फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन पॉलीगॉन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। पॉलीगॉन ने रिसेंटली शार्प प्राइस राइज देखा है और ये अभी 140 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अभी लास्ट कुछ दिनों में कई क्रिप्टो करेंसीज ने शार्प प्राइस देखा हुआ है और पॉलीगॉन को भी इसमें काफ़ी मदद मिली है। इस टाइम पे मेरा पॉलीगॉन शेयर है 1.44 लाख पे। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के लाइक्स 300 को पास करते हैं तो मैं दूसरा क्रिप्टो आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदा है पॉलीगॉन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जैसे ही कोई मैं शेयर खरीदूं या क्रिप्टो करेंसी खरीदूं तो सबसे पहले आपको पता चल सके। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, माय मनी यूनिवर्स।